Hello, welcome to my channel, Learning by Dr. Sunita. In this video, we will have a discussion on amalgamation of company. It's a it's a chapter of corporate accounting. So, amalgamation of company, accounting standard 14. Here we will discuss basic concepts and purchase consideration. So, हम इस वीडियो में basic concepts and purchase consideration पे discussion करेंगे. Okay. Now, let us come to the methods of purchase consideration one by one. So, already I have said there are four methods of purchase consideration. So, the first method is the lump sum method. अब हम lump sum method क्या होता है? Lump sum मतलब कुछ amount. Like under this method, purchase consideration will be paid in lump sum as per the valuation of purchasing company's valuations. मतलब इसमें परचेजिंग कंपनी बोलती है कि सेलिंग कंपनी को देखो, तुम अपनी कंपनी मेरे को दे दो, या आई एम परचेजिंग योर कंपनी, इन रिटर्न मैं आपको एक लम्प सम अमाउंट दूंगा. और इसके लिए कुछ कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती है, सम में डायरेक्टली लिख देगा कि परचेजिंग कंपनी इतना अमाउंट सेलिंग कंपनी को देगी. It will be given in the sum. No need to make any extra calculation. How it will be given? Just watch. Example. If it is stated that A Limited take over the business of B Limited, तो A ने जब business लिया तो A is your transferee and B is your transferor, OR, ठीक है, transferor. तो B is a transferor. तो अब जब B अपनी कंपनी A को देगा तो A B को क्या देगा? परचेज कंसिडरेशन देगा. क्या देगा देखते हैं, चलो. फॉर रुपीज 15 lakhs. Here the sum of 15 lakhs is the purchase consideration. एकदम डायरेक्टली सम में बोल दिया है कि A B को लेगा और B को रिटर्न में A क्या देगा? 15 lakhs rupees देगा. So that 15 lakhs is given directly. So that is the purchase consideration. So it is a lump sum method. It is given in the sum itself. No need of any calculation in case of lump sum method. See, next come the second method of purchase consideration is net assets method. So by net assets, I think it is clear. आपको याद होगा net assets हम कैसे करते थे? Assets minus liabilities, net assets. Okay, तो net asset method में क्या होगा? Under this method, PC is what? Purchase consideration shall be computed as follows. तो आप ये टेबल को थोड़ा सा ध्यान में रखना नेट एसेट मेथड के लिए, तब हो जाएगा. देखो, एग्रीड वैल्यूड ऑफ एसेट टेकन ओवर. जैसे मैंने बोला था अभी कि ए लिमिटेड बी को खरीद रही है, तो बी लिमिटेड इज द सेलिंग कंपनी. तब बी को कुछ अमाउंट मिलेगा ए से. तो इन दोनों के बीच में जो भी एसेट एग्रीड हुआ था, सपोज ए ने बोला था बी को कि आप चलो मैं तेरे को खरीदता हूँ, रिटर्न में तेरे को लैंड दूंगा, बिल्डिंग दूंगा, फर्नीचर दूंगा. तो मतलब आपस में उन्होंने जो भी एग्रीड वैल्यू किया है एसेट का, वो पहले आएगा एसेट टेकन ओवर. अगर वो बोलते कि नहीं मैं गुडविल लूंगा, 5000 का दूंगा, मैं इसका ये मैं 3000 की लैंड दूंगी, मैं 4000 का मशीन दूंगा, तो दिस आर द एग्रीड वैल्यू जो दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ है या एग्रीमेंट से हुआ है. सो ये इट विल कम एग्रीड वैल्यू और वैल्यूड ऑफ एसेट टेकन ओवर. ठीक है, जितना का वो एसेट टेकन ओवर लेस एग्रीड वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज टेकन ओवर. मतलब लाइबिलिटीज का भी उन्होंने आपस में एग्रीमेंट हो गया कि मैं तुम्हारी ये लाइबिलिटी का पेमेंट करूंगा. यस. So agreed value of asset taken over minus agreed value of liabilities taken over equal to purchase consideration. Equal to purchase consideration under net assets method. Net asset method मतलब agreed value of asset taken over minus agreed value of liabilities taken over. And ये liabilities means liabilities. You know very well कि जैसे बैलेंस शीट में दिया हुआ रहता है ना, यहाँ पे सपोज एसेट में ये हॉरिजॉन्टल वाले बता रही हूँ एक बार, यहाँ पे लाइबिलिटीज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, और यहाँ पे क्या होती है इक्विटीज एंड रिजर्व. We will not take this part. We will take this assets, pura assets minus liability portions. So you will get this asset minus liabilities purchase consideration, but only agreed value. What we will take? What is agreed between them? जो भी उनके बीच में agreement हुआ है, सिर्फ वही आप. Now let us solve one example of net asset method. See, in this what it is given, calculate purchase consideration फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन बैलेंस शीट. तो देखो इसमें क्या दिया, लाइबिलिटी दिया हुआ है, एसेट्स दिया हुआ है. ठीक है, तो लाइबिलिटी में कैपिटल, डिवेंचर, क्रेडिटर्स, जनरल इज द प्रॉफिट एंड लॉस, एंड एसेट्स में गुडविल है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लान, स्टॉक, डेटर्स, कैश, प्राइमरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट एंड शेयर. अब देखो एडजस्टमेंट में क्या बोला, द ट्रांसफरिंग कंपनी टेक्स ओवर द बिजनेस ऑफ ट्रांसफरर कंपनी. ऑब्वियसली ट्रांसफरिंग कंपनी विल टेक, परचेजिंग कंपनी टेक द सेलिंग कंपनी.
on the following terms and valuation. क्या agreed हुआ है उनके बीच में? The values placed on the various assets are. तो देखो ट्रांसफरी कंपनी और ट्रांसफर के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि गुडविल वो कितने में लेगा 60,000 में, लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000 में, स्टॉक 60 में, डेटर 75 में, and debtor is 55, sorry, stock is 75, plant in 60. Okay, then cash not taken, they will not take the cash. Creditor to be satisfied at rupees 40,000. तो ये इनके बीच का एग्रीड वैल्यू. तो मुझे बताओ यहाँ पे एग्रीड वैल्यू ऑफ एसेट क्या है? तो एग्रीड वैल्यू ऑफ एसेट टेकन इज दिस and agreed valued of liability is this. So this agreed valued of asset taken minus agreed valued of liability. See, let us see how we have done this. Let us see in the back. तो ये वाली हमारी agreed valued of asset है, ये हमारी agreed valued of liability है, और उन्होंने कैश नहीं लिया. So here you see those agreed value जो मैंने वहाँ पे राउंड करके आया था. तो गुडविल उन्होंने जितना में लिया यहाँ लिख दो. जितने में लैंड एंड बिल्डिंग लिया, प्लांट लिया, स्टॉक लिया, डेटर लिया, लोगों ने कैश नहीं लिया. नाउ यू मेक अ टोटल ऑफ दिस. सो टोटल इज 3,70,000. अब उन्होंने लाइबिलिटी कितने में लिया था? एग्रीड वैल्यू वहां पे दी हुई थी ना 40,000. यू राइट इन ब्रैकेट मींस माइनस. सो योर परचेज कंसिडरेशन इज हाउ मच? 3,70,000 माइनस 40,000 इज 3,30,000. दिस इज योर परचेज consideration. So you do in this format, like values of asset taken and rupees, and then you write here value of, you can write here value of liabilities taken, okay, and then less this. So in this way you will calculate the net asset method. I hope it is clear to you. Then comes again second sum on net asset method. See, it will be more clear to you by this example. The company A and B whose business are of similar nature decided to amalgamate. मतलब यहाँ पे A और B decide किया कि हम साथ में मिलेंगे और एक new company form करेंगे AB. This is amalgamation. Is formed to take over their assets and liabilities. ठीक है भैया. तो यहाँ पे देखो A कंपनी का दिया हुआ है, B का भी दिया हुआ है, A का भी है, B का भी है. It's an balance sheet is given. अब नीचे क्या बोले? Assume that the assets and liability are worth at their book value. What amount each company will get? Pass journal entry in the books of the companies. Also prepare the balance sheet of AB Company Ltd. But here we will not solve all this. We will only calculate purchase consideration. तो यहाँ पे क्या बोले? Asset and liability are worth at their book value. मतलब जो भी इनकी book value है वही agreed amount है जो A and B और कंपनी A B के बीच में डिसाइड हुआ है. So what AB will pay to them? He will pay all his assets minus agreed value of liability. जो इनकी book value है वही. So let us solve. See यहाँ पे goodwill दोनों का दिया हुआ है, plant दिया हुआ है, land दिया हुआ है, stock in trade दिया हुआ है, sundry debtor, cash, सब कुछ. And liability में we will not take this because these are what? These are not liability. These are shareholders fund. Okay, we will take sundry creditors. Not reserve also we will not take because reserve is also here shareholders fund. Profit and loss also will not take. So sundry creditors. Here only one liability is there, that is sundry creditors. So let us see in the next slide. See various asset taken over. So A company का various asset था 83,300. You see all the assets total you take. Then all the assets of B company का last में total है, आप sum में देखना 52,000. And what I said in the liability, what is given? Only creditor was there. Rest all was shareholders funds and reserves was there. So will not take that. तो liability इतना दिया हुआ था, इतना, क्योंकि उन्होंने बोला है assets and liability को book value में ले रहे हैं, worth their value. तो जो आपके बैलेंस शीट में वही वैल्यू हम लेंगे. Therefore purchase consideration payable. तो AB कंपनी A को कितना पैसे देगी? 80,000. 83,300 minus 3,300, right in bracket, yeah. And again here 52,000 minus 2,000, 50,000 it will be. So A, B will pay purchase consideration to A and B. तो वो A को कितना देगी? A को 80,000 देगी और B को 50,000 देगी. Is it clear? Now this is your थर्ड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग परचेज कंसिडरेशन. हमने दो मेथड करके आए हैं. क्या क्या? एक लमसम मेथड, दूसरा नेट एसेट मेथड. नेट एसेट मेथड में क्या था? एग्रीड वैल्यूड ऑफ एसेट टेकन माइनस एग्रीड वैल्यूड ऑफ लायबिलिटी टेकन. ओके, नाउ अब ये वाला हम देखते हैं इसमें क्या होता है. अंडर दिस मेथड पीसी परचेज कंसिडरेशन इज कैलकुलेटेड बाय एग्रीगेटिंग टोटल पेमेंट्स मेड बाय द परचेजिंग कंपनी. मतलब अगर सम में आपको दे दिया कि ए ने बी को लिया और रिटर्न में ए ने बी को क्या क्या दिया? कैश दिया, शेयर्स दिया, डिवेंचर दिया, देन हाउ यू विल कैलकुलेट? क्योंकि एग्रीड आप नेट एसेट मेथड से कर नहीं सकते हो, लमसम मेथड ये है नहीं. सो व्हेन दे गिव द शेयर्स, कैश, डिवेंचर्स, देन वी विल गो विद नेट पेमेंट मेथड. समझ जाना, सबको देखते हैं कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने के लिए. सो ये लेट अस सी. ए had taken over the B.
तो ए कौन है? ट्रांसफरी, and have taken over the B is a selling company or transferor, and for that it agreed to pay. A ने जब B को लिया तो B को रिटर्न A ने क्या क्या देने का सोचा? ₹6,000 इन कैश देगा, वेरी नाइस, एंड 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each he will give. ठीक है, 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each it will give, but each 10 each fully paid at an agreed value of ₹15 per shares. मतलब जो 10-10 रुपए की इक्विटी शेयर थे बी के पास, वो उसके लिए क्या पे करेगा? 10 रुपया नहीं, न्यू कंपनी विल गिव अ एग्रीड वैल्यू ऑफ ₹15. तो न्यू कंपनी कितना पैसा देगा ओल्ड कंपनी को? 5 lakhs into 15 rupees, not 10. 10 was the ओरिजिनल प्राइस, बट न्यू कंपनी बोलता है नहीं मैं 10 नहीं, मैं 15 रुपीज दूंगा आपको पर शेयर को, एग्रीड वैल्यू दोनों के बीच का. तो 5 lakhs into 15, how much it will come? That amount shares, and then he will pay debenture 6% debenture of 3 lakhs. Then the purchase consideration will be ascertained as, मैंने बोला था purchase consideration can be in the form of cash, shares, debentures, bonds, anything. So yeah, you see, first you take the cash one. How much cash? Cash लिख दो यहाँ पे, कितना कैश दिया? 6 lakhs. देन मैंने बोला था 5 लाख शेयर ऑफ 10 each, बट वो कितने में दे रहा है? न्यू कंपनी कितना दे रहा है? 15 रुपीज. सो 5 lakhs into 15 is 75 lakhs. अगेन डिवेंचर कितने में दे रहा था यहाँ पे? 3 lakhs. तो डिवेंचर्स. नाउ हियर इज नो बॉन्ड्स, नथिंग. उन्होंने ये तीन चीज ए कंपनी बी को देगी, देन टोटल इज 84 lakhs. दिस इज योर परचेज कंसिडरेशन. व्हाट इज पेइंग टू बी? 84 lakhs rupees. So this is net payment method. I hope it is clear. Then comes the intrinsic value. See, we have discussed lump sum method, we have discussed net asset methods, we have discussed net payment method. Here now comes intrinsic value. What is intrinsic value? See, assets, first let me know you the formula. Asset available for equity shareholders. जो भी assets equity shareholder के लिए बचा है, by number of equity shares. उनको जितनी भी number of equity shares है, by number of equity shares. अब चलो एक example के साथ I will explain you, it will be more clear to you. The purchasing company agrees. अब किसी किसी सब में ये एक लाइन डाल देता है बीच में. It is not a I am telling you the fourth method, मगर ये ना वो आगे की मेथड में ये कभी कभी ये लाइंस डाल दी जाती है. देखो कैसे सम्स में. The purchasing company agrees to issue 4 shares of ₹10 each for every 3 shares of ₹10 each of the vendor company. मतलब जो नई कंपनी है वो क्या बोल रही है कि मैं 4 शेयर दूंगा, हर एक शेयर 10-10 रुपया का. किसके बदले? आपके हर एक 3 शेयर जो 10-10 रुपए के होंगे. मतलब वेंडर कंपनी के 3 शेयर्स पे परचेजिंग कंपनी विल गिव 4 शेयर्स. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द वेंडर कंपनी आर 10,000. और बोलते हैं वेंडर कंपनी के टोटल शेयर्स कितने हैं? 10,000 के हैं. और द मार्केट प्राइस ऑफ इच शेयर ऑफ द परचेजिंग कंपनी इज ₹15. बोलते हैं जो परचेजिंग कंपनी जो अपना 4 शेयर्स दे रही थी उसका मार्केट प्राइस कितना होगा? अभी मार्केट प्राइस इज ₹15. So find out purchase price. Now you see how. The total number of share to be issued by the purchasing company to the vendor company. देखो ये कैसे करना है. देखो total number of share जो purchasing company vendor company को देगा वो कैसे करेंगे. देखो वो क्या बोल रहे हैं कि purchasing company vendor company के हर एक 3 शेयर्स पे 4 शेयर देगा. तो हाउ? देखो एक मैं यहाँ पे बताती हूँ कि वेंडर कंपनी के अपने कितने शेयर्स हैं? 10,000 शेयर्स, और उसके हर 3 शेयर्स पे 4 मिलेगा. तो डिवाइड बाई 3, उसके जो 3 shares, तो when you will divide by the 3, whatever number comes, and what you will give in place of 3 shares, the new company will pay 4 shares. So into 4. So how you will do? देखो वेंडर कंपनी का अपना 10,000 शेयर्स था और उसके हर 3 शेयर्स पे 4 शेयर मिलेगा. तो 3 से डिवाइड कर दो, और उसको कितने 3 से डिवाइड करने का जो भी शेयर्स आएंगे उसको उतने पे कितने कितने मिलेंगे? हर 3 शेयर्स पे 4 shares. So 10,000 by 3 into 4. So here you will get the number of shares. It is 13,333 1/3. Is it clear? अब वो परचेज प्राइस कितना है? द मार्केट प्राइस ऑफ इच शेयर इज ₹15. कितना है? 15. तो जो भी इसमें आएगा उसको आप इंटू 15 कर दो. देखो यहाँ पे हमने कैसे किया, जैसे ये वाला पोर्शन ले लिया 1333. यू टेक दिस इंटू 15, यू विल गेट दिस अमाउंट. And then 1/3 को भी आप 15 से इंटू कर दो तो you will get ₹5. So total, both of you total, then it is ₹2 lakhs. Or you can do in this way also. How? See, this way we can do, that is 3, हमने यहाँ पे divide कर दिया 5. 9. 5 4 are 20. 20 into 1 lakh is how much? 20 into 1 lakh is
Yes, 20 into 10,000. Sorry, 20 into 10,000 is 2 lakhs. So you can do this way also. Okay. I hope it is clear to you. You can go by this way also. You can do this also. 10,000 by 3 into 4 and कितने रुपए में वो share लिया है? Rupees 15. So into 15. And then you will ultimately you do whatever, if it's cut, it's fine. Then it's your ultimately it is 2 lakhs. I hope intrinsic value is clear to you. Explain you with one more example. So ultimately it will be clear to you. Yeah, the amalgamation sum C. Following the balance sheet of Alpha Limited. So here what is now we will see that here Alpha Limited is the transferor company. Okay, and B will be the transferee company. It is not clear here, but it is. So here you see what is given. Here the share capital what is given, 10% preference share of 100 each. 100 each. How much? 3,75,000. Equity share of rupees 10 each. 7,50,000. General reserve 4,50,000. 7% डिवेंचर 3,50,000, करंट लाइबिलिटी 2,50,000, टोटल इज 21,75,000. यहाँ पे क्या दिया है? फिक्स एसेट है 16,25,000 का, इन्वेस्टमेंट 3 लाख का, करंट एसेट्स है 2,50,000, टोटल इज 21,75,000. सो यू कैन सी हियर बिकॉज ड्यू टू दिस. ओके, नेक्स्ट कैलकुलेट परचेज कंसीडरेशन अंडर नेट पेमेंट मेथड. तो पेमेंट मेथड सुनते समझ जाओ कि यहाँ शेयर्स, डिवेंचर्स या फिर बॉन्ड्स या फिर कैश की बात हो रही है. सो लेट्स सी द फर्स्ट एडजस्टमेंट. यू सी the vending company agrees to discharge the 7% debenture at a premium of 10% by issuing 9% debenture of vending company. देखो vending company के पास में 7% debenture है, तो vending company ने ये अग्री किया है कि वो उसकी 7% डिवेंचर को डिस्चार्ज करेगी. हाउ? बाय इशूइंग 9% डिवेंचर. सो आई थिंक हियर इट इज इक्वल टू जितने का ये 7% डिवेंचर है उतने में उसने उसको 9% डिवेंचर से उसको इशू कर रहा है. So here you will have no entry, only 7% debenture will become 9% debenture. Now number 2, preference share are discharged at a premium of 10% by issuing 15% share of ₹100 each in vending company. मतलब प्रेफरेंस शेयर को आप कितने में डिस्चार्ज कर रहे हैं उन लोग? प्रेफरेंस शेयर कितने रुपीस का है? सी प्रेफरेंस शेयर इज 3,75,000, इट इज ऑफ 100 रुपीज इच, एंड वो कितने में देगा? 10% प्रीमियम में देगा. तो 100 पे 10%, अगर 100 पे 10% प्रीमियम अगर करोगी तो कितने का हो गया? 110 का. सो हाउ वी विल डू? 3,75,000 डिवाइड बाई 100. सी 3,75,000 डिवाइडेड बाई 100, और वो कितने में उसको ले रहा है? एट अ प्रीमियम ऑफ 110%. और जो ये प्रेफरेंस शेयर 10% था अब वो बन गया है 15% प्रेफरेंस शेयर बस. तो उसको इंटू 110. सो अल्टीमेटली यू विल गेट दिस. Then next again, for every 2 equity share Alpha Limited, 3 equity share of ₹10 each in vending company will be issued. बोलता है Alpha Limited के हर एक 2 शेयर पे vending company will give 3 shares. So let us see how many equity share they have. They have total equity share is 7,50,000 of 10 each. So 7,50,000 by 10 if we do it is 75,000. Then 75,000 पे हर एक 2 शेयर पे, तो 2 से डिवाइड कर दो, माने ट्रांसफर कंपनी का 2 शेयर्स पे, तो डिवाइड बाय 2. वो ट्रांसफर कंपनी कितना दे रहा है? 3 शेयर्स, 3, और कितने कितने रुपीस का? 10 रुपीस का. सो अल्टीमेटली यू विल गेट दिस अमाउंट again. And in addition to cash payment of ₹3 per equity share in AB Limited, in Alpha Limited, तो मतलब अल्फा में जो भी जितने के भी इक्विटी शेयर है वो उतना कैश उसको देगा. तो उसके पास कितना इक्विटी शेयर है? 75,000. तो 75,000 पे कितने कितने रुपीस करके वो कैश देगा? 3 करके देगा. सो दिस इज अल्टीमेटली द कैश. सो द परचेज कंसिडरेशन इज 1762500 इज द परचेज कंसिडरेशन. ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू. I hope the basic concept of amalgamation and the methods of calculating purchase considerations, that is lump sum method, net asset method, net payment method, and intrinsic value of shares method is clear to you. And I have explained you with examples. I think it will be helpful to you. And now for the journal entries of amalgamation and also the lasers, please watch my next videos. And if you like, please like, share and subscribe. Thank you so much.